Vaishnavad Brahmutsa Pravjigacharya Asvatar Sata Srimad Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Shri Radha Madan Mohan ki. Shri Krishna Balaram ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Gaurni Tai ki. Shri Prahlad Nrsimhadev ki. Nitai Gaur Premanand. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. तो आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमें श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य एवं नित्य पार्षद का संग मिल रहा है। प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस मेधावी प्रभु, हरि बोल। और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी हर ग्रेस ललिता माता जी, हरि बोल। तो प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। तो जैसे बताते हैं कि भले ही पाश्चात्य देश में प्रभु जी का जन्म हुआ या फिर श्रील प्रभुपाद के इतने शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद के नित्य संगी हैं, वो नित्य पार्षद। तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद वहाँ पर गए, वो लोग श्रील प्रभुपाद को ज्वाइन कर लिए। इसलिए देश काल से हमें भेद नहीं करना चाहिए, ये लोग बहुत ही महान भक्त हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। तो प्रभु जी का जन्म अमेरिका के एक बहुत ही छोटे शहर मेम्फिस टेनेसी में हुआ था और रोमन कैथोलिक परिवार में प्रभु जी जन्मे थे और उसी प्रणाली में प्रभु जी ने शिक्षा प्राप्त की और बचपन से ही प्रभु जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के रह चुके हैं और उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। तो पहली बार वो भक्तों से मिले सन 1973 में संडे लव फीस्ट के एक कार्यक्रम में, और जो संकीर्तन ट्रैवलिंग संकीर्तन भक्तों के द्वारा आयोजित किया गया था। और उस समय प्रभु जी कुछ योगा का अभ्यास भी करते थे और साथ में मार्शल आर्ट्स भी सीखते थे, सो संभल के रहना। और प्रभु जी वेजिटेरियन भी थे, अभी तो हैं ऑफ कोर्स प्योर वेजिटेरियन है। तो प्रभु जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारी जिज्ञासाएं पूछी भक्तों के साथ और भक्तों ने बड़े प्रेम से और शांति से उनका उत्तर भी दिया। सबसे संतुष्ट होकर के प्रभु जी ने निर्णय ले लिया कि अब ISKCON में ज्वाइन करना है। इसलिए 1973 में प्रभु जी ने अमेरिका में ISKCON मंदिर ज्वाइन किया, अटलांटा US में। और प्रारंभ के दिनों से ही प्रभु जी पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण में लग गए और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने ये वाली सेवा करी है। तो इस फ्रंट लाइन बुक डिस्ट्रीब्यूटर। और प्रभु जी की दीक्षा हुई सन 1975 अप्रैल में श्रील प्रभुपाद से, और दीक्षा भी विशेष जगह हुई वृंदावन के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, अरे बा। और प्रभु जी इज ए ट्रैवलिंग प्रीचर, बहुत जगह उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, संकीर्तन लीडर के माध्यम से अपनी सेवाएं दी हैं, अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी जगह। और प्रभु जी दीक्षा गुरु हैं और अभी प्रभु जी केप टाउन साउथ अफ्रीका में निवास करते हैं और श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। सन 1989 से लेके दोनों की काफ़ी घनिष्ठ मित्रताएं हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी और माता जी का संग मिल रहा है। हम उनका स्वागत करेंगे 3 बार जोर से, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज ग्रेस मेधावी प्रभु की, हर ग्रेस ललिता माता जी की जय, श्रील प्रभुपाद की। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam
tato jayam udirayet nastavreshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki idam bhagavatam nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niksaya Sayazalokasya Dhanyam Swasti Ayanam Mahat. Reading from Srimad Bhagavatam. Canto 10, Chapter 6, Text 12. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Tasya Swanena Ati Gambira Ramasa Sadrir Mahi Josh Cha Chachala Sagaha Rasa Dishash Cha Pratine Dire Janaha Petu Shito Vajra Nipata Shankaya. What's the melody? Tasya svanenati kabira ramasa Tasya svanenati kabira ramasa Chadrir mahijos chachala sagraha Sadrir mahijos chachala sagraha Rasasti chascha pratine direjana Rasadishascha pratine direjana Petu shito vrajra nipata sankaya Petu shito vajra nipata sankaya Tasya svanena tikabira ramasa Sadrir mahijosh chachala sagraha Rasadishascha pratine direjana Petu shito vajra nipata sankaya Nina chikabira ramsa Nirmahijo chachachala sagra
Digabira Ramasa Mahijos Chacharamatra Sajisascha Patinedi Rajana Yasanena Ikanina Sadrir Mahijos Chachatala Sagra Sajisascha Patinedi Rajana Vitu Shita Vajra Nipata Shankaya Yasanena Tikabira Ramasa Maharaji, Tikabira Ramasa Vijo Chitala Sagraha Adizascha Pratineni Jayuna Dushito Vajra Nipata Shankaya Yasanena Tikabira Ramasa Vijo Sajisascha Pratinedi Rajana Of the great Rakshasi Putana, Swanena, by the vibration of the sound, Ati, very, Gabira, deep, Ramhasa, forceful, Saadri, with the mountains, Mahi, the surface of the world, Jocha, and outer space, Chachala, trembled, Sagraha, with the stars, Rasa, below the planet Earth, Dishacha, and all directions, Pratinedire, vibrated, Jana, people in general, Petu, fell down, Shito, on the surface of the world, Vajranipata Shankaya, by suspecting that thunderbolts were falling. Translation. As Putana screamed loudly and forcefully, the earth with its mountains and outer space with its planets trembled. The lower planets and all directions vibrated, and people fell down, fearing that thunderbolts were falling upon them. Please repeat. As Putana screamed loudly and forcefully, the earth with its mountains and outer space with its planets trembled. The lower planets
and all directions vibrated, and people fell down, fearing that thunderbolts were falling upon them. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks that in this verse, the word rasa refers to the planetary systems below the earth, such as Rasatala, Atala, Vitala, Sutala, and Talatala. Om Jnana Tirandasya Ananjana Slakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yota Parakamalam Shri Gurun Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakams Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpatubhyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So I must say, and I love to say, that I'm so happy to finally come to ISKCON Ujjain. हरे कृष्णा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ उज्जैन में आकर बहुत ही खुश हूँ। ISKCON Ujjain. इस्कॉन उज्जैन। So we were very much overwhelmed by the good qualities, the wonderful qualities of His Holiness Bhakti True Swami. हम श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के सद्गुणों से काफी प्रभावित थे। And we were fortunate for some years, only a few, for Maharaj to be our co-GBC in South Africa. तो ये हमारा परम सौभाग्य था कि श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज साउथ अफ्रीका के कुछ वर्षों तक को जीबीसी थे। So we were in Cape Town, and Maharaj he came numerous times to Cape Town, and we were blessed by his wonderful presence, his association, and his general kindness and bliss. तो वो कई बार केप टाउन साउथ अफ्रीका आए और उन्होंने हमें अपने So we're very happy that finally
we were able to come to see this wonderful, beautiful temple and the beautiful deities and the beautiful devotees. तो यहाँ पे आकर हमें बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और बहुत ही अच्छे भक्त भी हैं. And it's practically only possible by the grace and the potency and the desire of such a pure soul as Bhakti Charu Swami. और ये श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की कृपा, उनकी शक्ति और उनके इच्छा के कारण ही संभव है. So here we are in the material world, and we're reading about Putana. और हम अभी भौतिक जगत में हैं और अभी हम पूतना के बारे में पढ़ रहे हैं. And she was, we think of demons these days, but she was a real demon. तो हम आज के ज़माने में दानवों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो एक असल में दानव असुर थी, राक्षसी थी. And sometimes we think, of course as devotees, we don't want to harm any living entity, and maybe even sometimes we try to imitate the disciple Mrigrari of Narada Muni. भक्त के रूप में हम किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते और हम नारद मुनि के जो शिष्य हैं मृगारी, उनका अनुकरण करना चाहते हैं. The ants away. और हम ये चींटियों को भी बचा बचा के चलते हैं. But Putana was a gigantic demon. लेकिन पूतना एक बहुत ही भयंकर राक्षसी थी. And in the third canto, the description of Hiranyaksha and Lord Varahadev, we really are ants. तो तीसरे स्कंद में भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष का वर्णन है. That Lord Varaha was able to carry the earth on his tusks. तो भगवान वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए थे. So we're not even ants. तो हम एक चींटी भी नहीं हैं. We're microbes. हम एक माइक्रोब की तरह समान है. But we think we're a lot more than that. लेकिन फिर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं. Srila Prabhupada, there was one discussion with one of his very senior devotees. तो मैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त से संवाद कर रहा था. And Prabhupada was saying that on this earth planet, श्रील प्रभुपाद कह रहे थे इस लोक में there's one city, एक शहर है, one big city. It's called New York City. एक बहुत बड़ा शहर जिसे न्यूयॉर्क शहर कहते हैं. And in this big city of New York, there's this one temple. और इस बहुत बड़े big temple, 13 stories. और इस बहुत बड़े न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर है 13 मंजिलों का. And in this temple, there's one devotee. और इस बड़े मंदिर में एक भक्त है. And he thinks he's God. और वो सोचता है कि वो भगवान है. He thinks he can control. उनको लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है. So we're thinking like that we can control. But everything is under Krishna's control. तो हम ये सोचते हैं कि हम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है. Maya jakshena prakriti suyate sacharacharam etunanena kaunteya jagad viprivartate. मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरीत. Everything is going on under Krishna's direction. सब कुछ कृष्ण के निर्देशन में चल रहा है. And as we know, this material world is so difficult to experience the trials and tribulations that are going on everywhere around us and maybe even within our personal lives. और हम यहाँ देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारे जीवन में हमेशा पद पद पर विपदा ही है, हमेशा संकट हमारे जीवन में रहते हैं. But Krishna is in perfect control. लेकिन कृष्ण पूरी तरीके से सबको नियंत्रण में रखते हैं. And we can see that when we meet a personality like
Bhakti True Swami and other pure devotees. लेकिन जब हम श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज या फिर अन्य शुद्ध भक्तों से जब उनका संग लेते हैं, And therefore, the association of devotees is so important. तो इसीलिए भक्तों का संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। And sometimes it may be that the association of devotees is very difficult. और कभी कभी यह भक्तों का संग बहुत ही दुर्लभ भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। But that association has a very powerful लेकिन effect. यह जो संग होता है अपना बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ता है। We know about the body. हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, Some of us know about the mind. हम में से कुछ अपने मन के बारे में जानते हैं। Some people think we're the body. कुछ सोचते हैं मैं यह I शरीर am हूँ, the body. मैं शरीर हूँ। Some people think I'm the mind. कुछ लोग सोचते हैं मैं मेरा मन A हूँ। lot of people think. ज्यादातर लोग ही सोचते हैं। A lot of people think they're the body as well. And a lot of people think of living on the level of intelligence. तो कुछ लोग बुद्धि के स्तर पर रहने को सोचते हैं, But then there's a finer level than even the intelligence. लेकिन बुद्धि से भी सूक्ष्म एक स्तर है And that is the ahankar. और वो false अहंकार ego. का है, मिथ्या अहंकार। So you can't purify something that you can't even experience with your intelligence. How's it possible? तो हम किसी ऐसी चीज का शुद्धिकरण ही नहीं कर सकते जो हम अपने बुद्धि के द्वारा भी नहीं समझ सकते, जो उससे भी सूक्ष्म है। So that false ego is dissolved in the association of devotees. लेकिन यह जो मिथ्या अहंकार है यह शुद्ध भक्तों के संग से चला जाता है। Putana disguised herself as a beautiful lady, पूतना ने अपने आप को एक सुंदर स्त्री का आवरण कर रखा था, but she was a big demon. लेकिन वह एक भयंकर राक्षसी थी। But in Krishna's presence, she could no longer hide herself. लेकिन कृष्ण की उपस्थिति में वह अपने आप को अपने रूप में छुपा नहीं सकी। She tried to carry out her nefarious plan of killing God. तो वह अपना जो घिनौना उसका जो योजना थी उसको वह पूर्ण नहीं कर पाई, भगवान को मारने की योजना। But she met her match, more than her match. क्योंकि भगवान उनसे भी ज्यादा बलशाली सवा शेर निकले। So these demons, they're in ourselves as well. तो ये जो राक्षस हैं हमारे अंदर खुद हैं। The personalities that Krishna kills, Srila Bhaktivinoda Thakur mentions that they are shown also to be factors that devotees have to defeat in their own personal lives. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जिन राक्षसों का भगवान कृष्ण वध करते हैं वो भक्तों की भी अनर्थ हैं जो उनको हटाने होते हैं, दूर करने होते हैं। So there's pretension. तो यह ठगी धोखेबाजी को नेतृत्व करती है। She pretends to be some nice, beautiful young lady. वह अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट कर रही थी। So much so that she even fools Mother Yashoda, Mother Rohini, and all the residents of Vrindavan. तो इतना भ्रमित कर दिया कि इस यहाँ तक कि माता यशोदा, रोहिणी और ब्रजवासी भी उसे पहचान नहीं पाए। But Krishna is never fooled. लेकिन कृष्ण कभी भी मूर्ख नहीं बनते। So we may be thinking that we are very advanced devotees. हमको ऐसा लग सकता है कि हम बहुत ही उन्नत भक्त हो चुके हैं, But we should always be looking at and trying to discover our bad qualities. तो लेकिन हमें ऐसा हमेशा देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने दुर्गुणों को जान सके, पहचान सके। Srila Bhakti Siddhanta said, someone who praises me, he's my enemy.
श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी मेरा गुण महिमा कीर्तन करता है वह मेरा शत्रु है। And here I am in the brahmacharya ashram or in any ashram, and someone is criticizing me. तो अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम हूँ या फिर किसी भी आश्रम हूँ, यदि कोई मेरी आलोचना या निंदा करता है, But he's actually doing me the greatest favor. लेकिन वह मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार कर रहा है। He's showing me things that I cannot see, वो मुझे ऐसे चीजें दिखा रहा है, ऐसे मेरे गुण बता रहे हैं जो मैं नहीं देख सकता। things that I may refuse to see. कुछ ऐसे गुण जो मैं जानबूझकर नहीं देखना चाहता। And if I'm intelligent, और यदि मैं बुद्धिमान हूँ, then I will thank that devotee very much तो मैं उस भक्त को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करूंगा, for pointing out something that I need to work on. क्योंकि वो हमें कुछ ऐसी चीज इंगित कर रहे हैं जिनको हमें जानना और देखना चाहिए। So Putana stands for that pretension. तो पूतना इसी ठगी को इंगित करती है। She wants to offer her breast milk वह भगवान को स्तनपान कराने आई थी, to the Supreme Personality of Godhead. भगवान कृष्ण को, But that breast milk is poison. किंतु वह उसने उसमें जहर लगा रखा था। Of course, she misunderstood the Supreme Personality of Godhead, तो वह भगवान को नहीं समझ पाई that he can drink any poison. कि भगवान कितना भी विष हो उसका पान कर सकते हैं। We're in the middle of, I think, Shivratri, so we had the fireworks last night keeping us up. Some of them sounded like it was an artillery barrage. जो कल नवरात्रि के कारण बहुत पटाखे बज रहे थे, But we know Lord Shiva's great तो हम activity of swallowing the poison. जानते हैं शिव जी बहुत महान है, उन्होंने विष पान किया था। So many people are worshiping Lord Shiva, Goddess Parvati, and they are worthy of worship, but they worship them as if they are the Supreme God. तो इसलिए कई लोग शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, ऐसा मान के कि वही परम भगवान है, And they simply want to acquire things from them. और वे सिर्फ उनसे सकाम कर्म, सकाम भक्ति लेना चाहते हैं, सकाम फल लेना चाहते हैं। So they are great personalities. तो ये जो हैं शिव जी पार्वती जी महान व्यक्तित्व हैं। The Jiyasamna Doshaya. तेजी अशम न दोषाय। They can, like the sun, Prabhupada would say that they can purify the urine from a dirty place and not be contaminated. श्रील प्रभुपाद कहते थे जैसे कि सूर्य चमकता है तो अगर जो मूत्र गिरा है उसको शुद्ध कर सकता है और साथ में वह दूषित भी नहीं होगा। But if we try to drink poison, we will be finished. लेकिन यदि हम विष पान करना चाहें तो हम मर जाएंगे। So there are so many poisonous things in this world. तो इस दुनिया में भी कई सारी विषैली चीजें हैं। And the devotees are trying to clean up the world. और भक्त इस दुनिया को शुद्ध साफ करना चाहते हैं। They're trying to deliver Krishna's holy names. वे भगवान कृष्ण का नाम प्रदान करना चाहते हैं, हरि नाम देना चाहते हैं। Chaito darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। So we have to purify ourselves. तो हमें स्वयं का शुद्धिकरण करना है। We have to help others purify themselves. और हमें अन्यों को उनके शुद्धिकरण में भी सहायता करनी है। Srila Prabhupada was in an airport in America, अमेरिका श्रील प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे थे and some devotees had brought some prasadam. और कुछ भक्त कुछ प्रसाद लेकर आए थे। And in the early days when Prabhupada would arrive in New York or Los Angeles, the devotees would take over the airport. और शुरुआती दिनों में जब श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में आते थे तो भक्त लोग पूरा एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते थे। The low ceilings and the long corridors and a mridanga and cartels would like erupt like a earthquake. तो जो एयरपोर्ट की लो सीलिंग्स या फिर जो बरामदे कॉरिडोर हुआ करते थे वहां पे भक्त लोग मृदंग कीर्तन के साथ पूरा भूकंप सा ला देते थे, भूचाल ला देते थे। And
People were either, of course, always, people were shocked, और लोग अचंभित हो जाते थे। people were amazed, लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। the pious people were pleased, और जो पुण्यात्माएं थे, अच्छे लोग थे, वो प्रसन्न होते थे। and the demons were annoyed. और असुर लोग गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित होते थे। So this devotee was giving out prasadam, तो एक भक्त प्रसाद दे रहे थे, and then the officials came and stopped the kirtan. और तभी कुछ अधिकारी आए और उन्होंने कीर्तन बंद करने को कहा। So the devotees had to stop तो their ecstasy. You're in ecstasy, and all of a sudden you have to stop ecstasy. भक्त जो कीर्तन के परमानंद में थे, उन्होंने अपने कीर्तन को रोक दिया So अचानक से। Prabhupada called that devotee over that was distributing the prasadam. श्रील प्रभुपाद ने उस भक्त को बुलाया जो प्रसाद बांट रहे थे, And he said, you distribute to the devotees. और उन्होंने बोला आप भक्तों को बांटो प्रसाद। Charity begins at home. जो दान है ये घर से ही शुरू करना चाहिए। So I'm speaking about the rest of the world where people don't care. तो मैं बाहर की दुनिया की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते। So we have to be kind. तो हमें लेकिन दयालु होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए। Lord Chaitanya is the king of kindness. श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, And we have to be kind to one another. और इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति भी उदार। Sometimes as renunciants and ascetics, तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है जो तपस्वी हैं, योगी हैं, we have to be so concerned about our own spiritual development. हमें स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बहुत ही ज्यादा विचार करना चाहिए। Do my rounds, do my austerities, do my fastings. We don't have much time to think of other people. ऐसा कि हम अपने अच्छे से जपमाला करें, अपना उपवास व्रत रखें, अपनी तपस्या करें और दूसरों से ज्यादा मतलब ना रखें। Then the ashram becomes a very icy place. तब ये आश्रम बहुत ही ज्यादा निर्जन स्थान से बन जाएगा। So we mustn't allow that to happen. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। There must always be devotees. There can be icy devotees too, but there always must be devotees who are concerned for their godbrothers, and in the case of ladies as well. तो ऐसे भक्त नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ एकांतिक भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन भक्त ऐसा होने चाहिए जो हमेशा दूसरों के बारे में ख्याल रखें, आदान प्रदान करें। Bhakti True Swami was always epitomizing that. श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हमेशा इसी को प्रदर्शित किया करते थे, प्रोत्साहित करते थे इसे। Whenever myself I would visit Mayapur for the festival, जब भी मैं किसी उत्सव के दौरान मायापुर जाता था, even he was walking with the big guns. तो The big gun. वो बहुत बड़े बड़े भक्त के साथ चलते थे। If he would see me, he would break away and come and give me a hug. और जब वो मुझे देखते थे तो वो रास्ता को खाली करवा के आते थे मुझसे और मेरा आलिंगन कर लेते थे। Maharaj knew how to defeat people by hugging them. उनका आलिंगन करके उनको पराजित कर देते थे। So there was that concern for every devotee. तो सदैव हर एक भक्त के लिए चिंतित रहते थे। And we miss that so much. और हम उनके इस भाव को बहुत ही ज्यादा स्मरण करते हैं। I miss personally, and I know you must all. तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें याद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। In March this year as well, one of our other great stalwarts, His Holiness Kadambakanana Swami, left this world. एक अन्य बहुत ही वरिष्ठ भक्त श्री श्रीमद कदम कानन स्वामी महाराज इस साल मार्च में भगवत धाम गए, प्रयाण किए। And all of our disciples of Prabhupada repeated once again that feeling. और श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उन्होंने फिर से यही भाव अपना व्यक्त किया। That person you completely depended on for your survival कि had apparently left.
कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन पर हम पूरी तरीके से आश्रित रह सकते थे, और वे चले गए। But he's not gone. लेकिन वे गए नहीं हैं, He lives in your heart. वे आपके हृदय में अभी भी उपस्थित हैं। And we do so many things all during the day. और हम अपने दिन भर में जो कई सारे कार्यकलाप करते हैं, The cook in the kitchen, he has to cook. The pujaris on the altar, it's amazing here. So many deities and so beautifully dressed, so beautifully garlanded. तो चाहे जो अलग अलग भक्त जो सेवा करते हैं, भले ही जो रसोइया किचन में कुकिंग करे या फिर जैसे पुजारी हम देखते हैं यहाँ मंदिर में, बहुत ही सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग होती है और सारे पुजारी बहुत ही सुंदर आराधना करते हैं और जो पुष्पहार है वो भी बहुत सुंदर है। And those are necessary services और अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं for the pleasure of the Supreme Lord. तो भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए की। But the Guru, when he supposedly leaves, गुरु तथा कथित रूप से इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, he incarnates in your heart. तार लेते हैं। Now we're looking so many places, but that's where he can be found. हम कई जगह पे उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन हमारे हृदय ऐसी जगह है जहां हम उन्हें पा सकते हैं। And that relationship with the spiritual master becomes more and more intense. और गुरु के, हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता जाता है According to the desire of the disciple. शिष्य की इच्छा के अनुसार यह संबंध प्रगाढ़ होता है। So there are plenty of demons in the world, even though they do not compare to Putana. तो दुनिया में बहुत सारे असुर हैं, यद्यपि हम उनकी पूतना से तुलना नहीं कर सकते, But they can be easily defeated लेकिन उनको आसानी से पराजित किया जा सकता है by Krishna's incarnation भगवान कृष्ण के अवतार के द्वारा, of the holy name. जो हरि नाम अवतार है। We know that Krishna has appeared in this age, his incarnation. हम जानते हैं भगवान कृष्ण इस युग में हरि नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। That one, Kalikala Nama Rupa, Krishna Avatar, and in the 12th canto, Krishna Varna, Trisha Krishna, Sangopangas Parshadam, Yagyai Sankirtana Prayaya, Yajanti Hi Sumedasa. People with good brains, and you all have very good brains, because you've realized, you've recognized that Krishna can be found in his holy name. श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया कि भगवान जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, वे भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं। तो आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप लोग यह समझ गए हैं कि भगवान कृष्ण उनके नाम के माध्यम से जाने जा सकते हैं। So Srila Prabhupada had that faith, श्रील प्रभुपाद को इसमें पूर्ण विश्वास था and he conquered the world. और उन्होंने इसीलिए पूरे विश्व को जीत लिया। And your Guru Maharaj, Bhakti Churum Swami, he also had that faith. आपके गुरु महाराज में भी यही विश्वास था। And even in so many few years, what to say, a few months, big temple, big beautiful temple. और कुछ साल की नहीं, कुछ महीनों की ही बात है कि इतना सुंदर भव्य मंदिर उन्होंने बनवा दिया। So the more our faith grows, जितना हमारा विश्वास बढ़ता है, and it all depends on the chanting of the holy name, और यह सब कुछ हरि नाम के जप पर निर्भर करता है, then we will experience that success in our own spiritual lives. तब हम यह अनुभव करेंगे कि हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन में हमें सफलता मिलेगी। And we'll see the Krishna conscious movement save the world. और हम देखेंगे तो कि ये भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये पूरी दुनिया को बचा सकता है। So as our faith grows, तो जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, then we'll be able to recognize this is happening. It's actually happening. तो तब हम ये समझ सकते हैं कि यह वास्तव में होता है। And we come to Ujjain and we see it's happening. और जब हम उज्जैन में आते हैं तो हम You may not see it,
We see it. जब हम उज्जैन में आते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, यह सही में घटित हो रहा है। आप भले ही ना देख पाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, हो रहा है। You don't know what the rest of the world is like. आप नहीं जानते क्योंकि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। Even the rest of the ISKCON world is like. यहाँ तक कि बाकी के इस्कॉन जगत में भी क्या हो रहा है, ये आप नहीं जानते। So we are very happy to be here, and we very much appreciate what Bhakti Charu Maharaj has done and what you are doing. तो हम यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हैं और हम इसकी बहुत ही सराहना और आभार व्यक्त करते हैं जो श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने किया और आप जो अभी कर रहे हैं। To continue his legacy. आप उनका जो विरासत है आप उसको जारी आगे बढ़ा रहे हैं। Of kindness and concern for everyone. आप सबके प्रति दयालु हैं और सबके प्रति सबका ख्याल रखते हैं, सबके प्रति चिंतित हैं। And that's how we say that love. People are thinking you need F-15s and Su-47s and multiple warhead rockets to conquer. No, you need love. तो इसी को हम संपत्ति समझते हैं। लोगों को लगता है उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां रहेगी, रॉकेट रहेगी तो दुनिया को जीत लेंगे। नहीं, आप प्रेम से लोगों को जीत सकते हैं। In the Catholic Church, I was raised Catholic, and they have many lives of the saints. तो कैथोलिक चर्च में मेरा लालन पालन हुआ, तो मुझे वहाँ के संतों के बारे में, उनके जीवन के बारे में पता है। And they talk about the martyrs. और वे शहादत के बारे में बात करते हैं। Jesus Christ was a martyr. जीसस They think. क्राइस्ट ने अपना, We don't think he died. उन्होंने भी अपने लिए शहादत चुनी थी, वो मरे नहीं थे, हम ऐसा कहते हैं। He was a very merciful guru. वे बहुत ही दयालु गुरु थे। Imagine, कल्पना कीजिए, you give someone the beads, they don't have to follow any regular principles. They don't have to chant Hare Krishna. And I'll take your sins. Nah. कल्पना कीजिए कि आप किसी को जपमाला देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको 4 नियम भी नहीं करना है, 16 माला भी नहीं करना है, मैं तुम्हारे सारे कर्म लेता हूँ। सोचिए इसको, और मैं आपके लिए जान दूंगा। They don't improve without the austerity. तो लोग कोई तपस्या नहीं करना चाहते। You go on and on. So people misunderstand Jesus. Mostly the Christians. लोग विशेषकर क्रिश्चियन जो हैं, ईसाई हैं, वो जीसस को समझ नहीं पाते। A devotee understands Christ better than any Christian. लेकिन जो भक्त हैं वो जीसस क्राइस्ट को ईसाइयों से भी बेहतर समझते हैं। Srila Prabhupada was in South America. श्रील प्रभुपाद साउथ अमेरिका में थे। And he was staying in some host's wealthy man's home. और वे कोई एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के घर पर रुके थे, यजमान के घर पर रुके थे। And in the room where Prabhupada was staying, और जिस कमरे में श्री प्रभुपाद ठहरे हुए थे, there was a crucifix. वहां पे शूली, ऐसा जो क्राइस्ट की शूली है वो थी। And soon after Prabhupada moved into the room, he rang the bell. जैसे श्री प्रभुपाद कमरे में गए, उन्होंने अपनी घंटी बजाई And the devotee came in. और भक्त आए, And Prabhupada was crying. और श्री प्रभुपाद रो रहे थे। He said, "Take that out." और श्री प्रभुपाद ने कहा, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। They have killed their guru. इन्होंने अपने गुरु को मार डाला है। What does it mean? इसका क्या The अर्थ guru है? has just come to bless you. कि गुरु आप पर सिर्फ He's your only hope. आप पर कृपा करने के लिए हैं और वही आपके लिए सिर्फ आशा है, And you crucify him. और आप उनको शूली पर चढ़ा देते हैं। What does that mean? इसका क्या ही अर्थ है? Bhagavad Gita, Krishna says, they take religion to be irreligion and irreligion to be religion. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ऐसे लोग धर्म को अधर्म और अधर्म को अधर्म मानते हैं। So Prabhupada was so kind श्री प्रभुपाद बहुत ही कृपालु थे to give us the truth. कि उन्होंने हमें परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया। Again, Srila Bhakti Siddhanta is saying that the material desires श्री भक्ति सिद्धांत सर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भौतिक इच्छाएं हैं of the living entity, they're like
goats. जीवों की भौतिक इच्छाएं बकरी के भूत के समान है। And the sadhu stands over the goat with the sharp knife. अच्छा, तो जो जीवों की इच्छाएं वो बकरी के समान है और जो साधु है उस बकरी के ऊपर अपना तेज तलवार लेकर बैठते हैं, चाकू लेके बैठते हैं। The sharp knife, the strong words of the sadhu. और ये जो तीखी तलवार या तेज चाकू है ये साधु के वाक्य हैं और वाक्य। So again, now we're getting into another level. But time is up. Time is way up. So I appreciate the wonderful thing that your Guru Maharaj has given. Realize that he's here. इसकी सराहना He's in everything of this temple and all the buildings, the cows and the Goshala, and especially he's in each and every one of your hearts. हम इस बात की सराहना करते हैं जो भी आपके गुरु महाराज ने दिया है और वो आप सबके बीच में हर जगह इस मंदिर के हर एक कोने में, हर एक भक्त के हृदय में, हर एक बिल्डिंग में, गौशाला में, विशेषकर भक्तों के हृदय में वो अभी भी हैं। And together we can defeat all these demons. और हम सब मिलकर इन सारे असुरों का नाश कर सकते हैं। It will take some time, but कुछ समय लगेगा, it's just a matter of time. बस कुछ समय की ही बात है। Srila Prabhupada ki, Srimad Bhakti True Swami Maharaj ki, Nitai Gaur Premanand. Hare Krishna.